Hi guys, sorry we were a little late. So can you all see us? Can you all check if we are live? I think we are live right now. Okay, we are live, right? Hi Abhay, hi Study Singh. तुम तो एग्जाम पे होने वाले थे. Can you all see us? Just someone say hi at the moment. Yeah, hi Abhay Verma, hi Nishkar. So now I can pin spotlight Mr. Sunny and I can spotlight myself. Thank God. Nice. Did you know कि Zoom पे spotlight तब हो सकता है जब कोई आता है हमारे Zoom पे, otherwise नहीं हो सकता. Hi Abhay, hi. I told you, I don't know so much technology. I have never done this spotlight and everything. Yeah, so otherwise I have to go log in from another ID on my Zoom, so like two of us can be. So luckily there are two people who have joined, so I can spotlight both of us. It's interesting. You will get to learn as you go live more often. I don't like this live and podcast business at all. Matlab, it's been a very long time I went live with somebody. अच्छा ठीक है, पर मुझे मजा आता है. पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था, अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि this is if you keep doing it, you will start liking it. Right. I enjoy in person conversations more, whether they are events or they are podcasts. Like I shot a podcast with this big YouTuber just a week back, but it was an in-person conversation and it was recorded on a camera. Okay. कौन था? किससे किया? नहीं यार, I don't remember. मतलब he has two crore subscribers on YouTube. अच्छा, you don't know who he was. Arvind Arora, A2A motivation. अच्छा, okay. The reason is कि मैं जकार्ता में रहती हूँ, मैं कितने लोगों को मिल सकती हूँ, so this is the only way I can get to know people online, right? Jakarta is in Indonesia, right? Yes. It's the capital city. Yeah. Okay. Yeah. So let me first introduce you, and then I'll introduce myself, just in case लोग मुझे नहीं जानते. और आपको तो you introduce yourself first. No, it's your channel. मेरा चैनल तो काफी लोग मुझे थोड़े बहुत तो जानते हैं, but let me introduce myself first. Okay, so hi, I'm Rachna Daryani. I'm a counselor, clinical hypnotherapist. I help children for free with counselling and soft skills training. मैं कभी-कभी इंग्लिश भी सिखाती हूँ, मोस्टली फ्री काउंसलिंग करती हूँ, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस करती हूँ, एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ बच्चों को हम लोग मदद करते हैं विद वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप भी है, वहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाई भी करते हैं. एंड बेसिकली मैं प्रोफेशनल्स को भी बुलाती हूँ पॉडकास्ट करने के लिए, ताकि वो बच्चों को गाइड करे. हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी करते हैं, जैसे आज आपके साथ हम काम कर रहे हैं. क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, just in case बच्चों को आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, नहीं तो मैं ही आपसे बात करूंगी. So today we have Mr. Sunny Garg with us, and he is with us because I saw his profile on Insta and I found it very interesting. So let me just tell you a little bit about himself. Redefining how landlords operate, tenants stay, and markets sell, Mr. Sunny Garg built Crib Inn, which is SaaS-based marketplace for co-living. It is backed by Black Soil and marquee angels like the co-founder of Bharat Pay, 91 Springboard, and now Floats, etc. He's a graduate from Delhi University and earned his MBA from the Indian School of Business. Right in college, he founded Your Shell, a full-stack co-living operator. After 3 years of successful operation and clocking a turnover of over 20 crores, it was sold at a multi-million-dollar valuation to Stanza Living. Being the youngest CEO to raise funds through the Stand Up India scheme of the government of India, his entrepreneurial spirit is truly motivating. He has inspired many young dreamers by sharing his life lessons at Joe's Talks and TEDx Talks. He's here to talk to us and give us inspirations and to tell us his inspiring journey. To all you young children, guide us कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या उनके लाइफ लेसन्स थे, क्या सीखा, क्या आपको, क्या अगर से कोई क्वेश्चंस है आप भी पूछ सकते हैं. इन्होंने क्या उनके अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं उनके बिजनेस में, उन्होंने कैसे लाइफ लेसन सीखे,
और बिजनेस में कैसे कुछ रिस्क कैसे लेते हैं, आप हमको बता सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं आप कैसे किस्म के जब आपने डाउन्स देखे हैं लाइफ में, तो हाउ डिड यू ओवरकम दीज काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ। आई एम श्योर व्हेन बिजनेस करना इजी नहीं होता, राइट? आपके हिसाब से आई थिंक व्हेन स्पेशली हाइज आर इजी टू डील विद, इट्स द लोज व्हिच आर वेरी टफ। सो highs are equally challenging to deal with. मतलब to keep your mental peace, to keep your mental state stable even at a high is a very difficult situation, because you end up ruining a lot of relationships and a lot of things in life while on a high too. Right. एक सेकंड my part. हाँ क्या हुआ? So I had another meeting which I skipped, so she was just confirmed. Okay. So I believe that highs and lows are equally challenging to deal with. The mistakes I've done while in the low in life, I've done worst mistakes at the high point in life. When I sold my company, I got a high in life that I have arrived, and I ended up a lot of, because when you are struggling in life, nobody cares about you. But when you get successful in life, so there are things you have to take care, because the attitude of people around you changes. So it is equally difficult to deal with. So do you think that जब आप ऐसे अचानक तुम इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और तुम्हें इतना अटेंशन मिलता है, then you get that attitude आ जाता है, right? Definitely यार, I won't say नहीं आता, मतलब because हम लोगों को क्या था, we worked for 3 years, nobody recognized us, and one fine day I woke up, my Instagram followers grew from 2,000 to 10,000. We were published in all the newspapers, people were writing about us. So that day I was like, मेरे से better कौन है at my age? So it took me the next 6 months to 1 year to kind of get back my feet on the ground. And if you don't have your feet on the ground, you end up ruining a lot of things for your own self. So I don't accept this very honestly, but ठीक है, you mentioned dealing lows in life is difficult. I believe dealing highs and lows are both equally challenging. True, but that takes a lot of guts, and I think that's a good thing that you're telling people कि humble रहो, क्योंकि वो भी एक अच्छा साइन होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली भी किसी ने मुझे कहा कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लोग मुझे बोलते हैं कि ओके यू नो, और किसी ने लिखा वी न्यू दैट यू आर रिच, वी डिडंट नो यू आर दैट रिच बट यू आर सो हम्बल, एंड दैट आई लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज यस आई हैव मनी, बट सिर्फ पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर से तुम्हारा सर हवे में है और तुम ब्रैग करते हो और तुम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हो, एंड यू डोंट हैव दैट ह्यूमिलिटी, पैसा तो आता जाता रहेगा, बट तुम्हें अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, वो पैसा किसी काम का नहीं है। और तुम्हें फिर दैट इज नॉट गोइंग टू, दैट्स नॉट द लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड, दैट यू आर so full of yourself and you are an arrogant person. So and trust me, जब पैसा नहीं होता ना, तब इतना संभल के नहीं रहना होता। जब पैसा आ जाता है तो लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है तुम्हारे अराउंड। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज वो गलती करेंगे और तुमने कुछ गलत कर दिया तो नाम तुम्हारा ही आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर एक साइकिल और एक ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो जाए, गलती साइकिल वाले की भी, नाम ट्रक वाले का ही आता है। तो अगर तुम्हारे पास ट्रक है तो तुम्हें साइकिल वालों से, गाड़ी वालों से, बाइक वालों से सबसे बच के घूमना पड़ेगा। True, very true. So let's rewind, okay? Let's start your journey. कहाँ से start हुई? और it's very fascinating. तुमने क्या किया? कॉलेज से start करते हैं। तुम्हारी जर्नी कहाँ से start हुई? तुमने कैसे तुम्हारा if as much as you want to share, anything you're uncomfortable, don't need to share. Let's start कि तुमने बचपन कहाँ से start किया और how did you come across and how did you make it? When did you realize you made it? What was it? And because I don't know much about you, right? So, and so many don't know what's your struggle like. Yeah. So basically, yaar, I didn't start my own company because मेरे को पैसे का वो था। I didn't start business for money.
I just liked problem solving since my childhood. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम मेरे सामने लेके खड़ा है तो आई वांट टू सॉल्व इट. एंड आई लाइक्ड बिजनेस, आई लाइक मेकिंग मनी. मतलब पैसा इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि पैसा चाहिए, बट पैसा बनाना पसंद था कि सी आई कैन मेक मनी. सो बहुत सिंपल था. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग मनी वर द टू थिंग्स आई रियली लाइक. एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दिस स्टार्टअप thing is now very normalish in India because Shark Tank and everything is booming. But when I was in college, this was not very new. And somebody came to a speaker session in my college and said, if you want to start a company, solve a problem, monetize it. Find a problem, solve it, monetize it. And this line took my kind of rato ki neend away. I will also kind of find a problem, solve it, and monetize it. So I tried solving different problems just around me. जो मेरे को दिक्कत है, मेरे आसपास के लोगों को दिक्कत है, but nothing clicked in the initial 1 year. I was able to make some money, but nothing was very scalable or something I can drop my career for. Then came a problem that everybody in and around me was cribbing about their hostels and PGs. So hostels and PGs in India is a very big problem. And I was talking about 2016 when these bigger companies like Stanza, Zolos of the world didn't exist. So all those budhe auntie uncle जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, but they have a property, they were running it, and they were running it for money basically. So they didn't care about who is doing what and कहते हैं कौन कितने पैसे दे रहा है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. So I didn't know that the problem is of the intent. I thought the problem is of finding of a good place. I started a company wherein we help people look properties through us like a typical brokerage firm, and they can book through us, and we make commission through the owner. So for example, if you book a 10,000 rupees month ka PG, the average brokerage size is 5,000 rupees. So I would like Airbnb or what? Not Airbnb. See, I come from a non-tech background. I didn't know technology. I didn't know anything. So it was basically me going out to different landlords, PG owners, and saying, I will get you kids, you give me commission. And I hired some interns while in college and dropped them on the ground and asked them, why don't you go out, help people with accommodation? I will give you XYZ commission. So if like I was getting so basically paying guests hote the, only you would be the in-between person to find these paying guests. Paying guests. So basically hostel. If anybody who's coming for graduation in Delhi University, so we would find them tenants and we would take commission from them. So we did it for good 25-30 days academic session when the admissions were open. We helped more than 400 people find accommodation through us, made good money. Like good money means 20-25 lakh rupees in revenue, and I was able to afford. I got a good part of it. So I started this because I wanted to buy an iPhone. The problem solving and everything was okay, but I wanted to buy a 6S because my dad was like, I have money, but I will not give you to buy an iPhone. Because iPhone was a rage during that time. So I bought an iPhone and I moved on because academic session was over. Now no tenants were coming, and I thought that this is a very seasonal problem. I will do something else. But later on, 3-4 months down the line, I started getting a lot of calls from people who booked PG through us, that I was promised this service, I was promised that service, and these people are not fulfilling their promises. So I realized that the problem is not of discovery, but of existence of good co-living spaces or PGs in Delhi. So we started Yorshell, wherein we used to take properties on lease, furnish them, provide services, and rent it out on a bedly basis to students. And it was as simple as me going out, taking 3 flats on rent and furnishing them with the basic knowledge of furnishing. We have 2-4 paintings मंगा के लगा दी इधर उधर से, Saturday market से bed डाल दिया इधर उधर से लेके, and we started with that. Then we grew from, let's say, 10-12 beds, 18 beds. We grew it to 140 beds in the next 6 months. Then we grew it to 450 beds in the next year, and then 600 beds in the last year. So when we had 600 beds, we were doing 80 lakh rupees a month in rental. So this was revenue coming to us. So during that year, we did a turnover of 10 crores. 10 crores was for the last 2 years and 10 crores for that year. And we were a 98% occupied space because I used to take care of everything. Like I was very customer obsessed.
कि किसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. I dropped my ISB Hyderabad admission also because I was running the company. It was going good. Then I got an acquisition offer from Stanza Living. They were paying us good money, and some of my partners wanted an exit, so we sold the company. And then eventually 3 months down the line, COVID happened. Okay. So we kind of got right point. Wow. got out of a rental business just after COVID. Right. So after that, I started experimenting in different domains, tried my hands on different businesses, but I realized that the rental business is the most exciting business for me. I cannot do anything else. I kind of realized my calling. I want to do something in this domain only, but opening your own co-living spaces is not going to solve the problem, because you cannot scale it to, let's say, 1 million, 2 million people who like just experience you can kind of change. And I realized that now, after 5 years from when the intent was missing in the industry to service, now people have intent, but they don't have resources. Like, I have 100 tenants living with me. I cannot listen to their problems on calls on a regular basis. When everything is done via technology, why not people manage their rentals through technology? I was the youngest, coolest co-living operator in town. Okay. The maximum technology I used was WhatsApp. So I realized that something needs to be done for the better management of these spaces. So that is how I started Crib, wherein we want to kind of digitalize the rentals and the transactions and the communications at rental housing. So we are funded by all these big names you took. We even have an investor from Jakarta. He's the ex CBO of Shipper. Okay. So he's Mr. Abdul. He invested money in our company from Indonesia itself. Okay. So how does this work? Like, what are you doing exactly on this? You're saying that Cribin is what exactly? So it's crib.in. We call it Crib only. Domain is crib.in. So we basically make apps for landlords and tenants. So for example, if you are somebody who manages a 100-bed property and you give it out to students or working professionals or in any other setup, so you can download our app, upload your property, upload your tenants. Now your tenants can also download the app, staff can also download the app, and every communication and transaction can happen through the app, whether it is related to rental payment or download of receipt or complaint filing, or maybe you want to check the menu, or you want to kind of meet any people who live in your property, because when you are living in a hostel, you don't know who is living there. So the community part is very missing. So we are kind of solving for this part of the problem. So there is transparency in everything, and even a record keeping of everything. Like, I don't want, as an owner, I want to remind my 100 tenants. There is no way I can remind. Right. So our system automatically kind of identifies who has paid the rent yesterday and who has not, and sends reminders to the other people and all of that. So it's a very complex technological product. मुझे ये बताओ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है रहने को ये सब जगहों में, उनके लिए कुछ है क्या? यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ. You think about all of this when you are a big company. मतलब my objective of being in the housing industry is I want to solve for people who are on the road. Like, once we are able to build a good sustainable business, we will divert a good part of our profits to kids who are on the road and don't have houses to live. Okay. जब ऐसा करोगे मुझे याद करना. Definitely. Because I get kids whose parents don't have money to send them to hostel, and like recently I have a child whose father is not, I don't want to like divulge what the problem is, because there are lots of kids who are having this issue. They cannot study at home because of whatever issues at home, and they don't have money to by themselves pay, or their parents are not paying for them for the hostel, and they cannot study at home. It's not a good environment for them to study, and they are very good at studying, and there is no way for them to go to the hostel to study. और घर में पढ़ाई हो नहीं रही है, और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और इतना like I feel so helpless कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और I know someone like वो भी ट्राई कर रहे हैं, but
ऐसा कुछ है नहीं बच्चों के लिए, फ्री, कि हॉस्टल में वो जाके पढ़ सकते हैं. Yeah, there are libraries where kids can go and study. हाँ, पर लाइक जहाँ पे वो है वहां पे नहीं है. लाइक ऑलरेडी ऑफ कोर्स मैंने वो सबसे पहले वही आइडिया दिया कि कुछ ऐसा करो, फ्रेंड के घर जाओ, नेबर के घर जाओ, लाइब्रेरी में पढ़ो, छत के ऊपर पढ़ो, छत के नीचे पढ़ो, टेंट लगा के पढ़ो. पहले वही आइडियाज दिए. पर आई एम जस्ट थिंकिंग, आई विश देयर वर लाइक certain things which children could do and get away from toxic families and toxic homes. Definitely. Yeah, so I hope you really succeed in what you're doing, so that kids. But we can start a crib foundation that caters to such. Yeah, like your CSR or something. Definitely. See, I believe in utilizing money earned for a betterment of the society. Right. Yeah, that would be so amazing if And what's your appetite for risk? Are you like a risk taker? What is your? I'm the most. I'm the extreme risk taker person you will meet in life. Oh, I dropped the Indian School of Business admission. Oh, really? Thinking twice. I could have just deferred it for 2 years. Oh, wow. Okay. I was like, karna hi nahi yaar, jana hi nahi, I will do something good in life. Okay. And ISB Hyderabad is like the top MBA college of India. I was one of the 100 who got selected that year. Wow. And you still said ki chalo. And your parents didn't mind, is it? You like they did. Oh. But that is who you are when you are an entrepreneur. You don't listen to people. Acha. So you are one of those. It was my admission. It was not their admission. अच्छा. और कुछ बच्चे हैं जो बहुत डरते हैं. Like, but then it's okay, right? Some of it depends on your appetite for risk. Yeah, exactly. सब ऐसे नहीं बंद कर सकते हैं, and that is also okay. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग. I don't recommend taking risk if you are not a risk taker, because once you take a risk, the life ahead is not very easy, not very fancy. Right. And you're like a very customer oriented person, right? You cannot build a sustainable business without being customer obsessed. Right. So do you think that, and you said, but you're not a technology person. When we just started, you said you're not really a technology person. So now that you're doing this ribbon thing, how are you aligning yourself with all this? I do face a lot of issues in that. See, whenever you are building a technology product, it is a technology product. I don't understand technology, but I understand to the core of what I want to build. कि मुझे ऐप में क्या क्या चाहिए exactly मुझे पता है, because I have done this business all my life. So technology के लिए I have good people. Like I have a CTO on board who is a co-founder in the company. He has worked with Microsoft, Make My Trip, and all these companies. Then we have a very amazing tech team, tech leadership in the company who handle all of that. And one of my the other co-founder, Shefali, she's very, very hardworking and very quick learner. So she has kind of understood technology. I take care of the business, sales, investment side of the company. So are you good at delegating, or you're like one of those you need to sit over everything? And I'm completely delegating. I don't like those people who are on the head of people every time. I'm like, you take the responsibility, you take the authority, but you will be responsible at the end of the day if I'm giving you authority for something. Okay. So my leadership style is clean. You don't cling to your projects. Yeah, I don't cling to my projects. So then you mustn't be getting burnt out नहीं होते होंगे. कि do you burn out? Everybody burns out. Yeah. No matter what you do, you get burned out. And how do you cope? There are things I like. See, for me, what I am doing it is one of the things I like the most in life. Following my passion of entrepreneurship, real estate, and building for the masses of the country. So I am following my passion. Though as compared to other things, burnout is less as compared to other people, because I'm not stuck in a job which I don't like. But even there are days when I get burnout. So there are other things I like watching TV, going out with friends, and I do have a good friend circle wherein I go out, take my mind space from the company and shift it to something else.
So the best way to cope up for a burnout is you have to divert your mind to something else. Right. So what is your something else? I liked watching TV. I watch a lot of TV. And do you have a hobby or something? Watching TV is my hobby. That's it. No, like skill or some guitar or something. No, I'm not somebody who likes dancing, singing. I'm away from all the extracurricular activities. I've never participated. I'm not the person who you will find on the dance floor. Okay. And during this whole journey of yours, did you ever have like a down? ये तो अब गया ना, तो जब See, नीचे गया तो for, क्या नीचे गया और कैसे for, handle? for every ups, there are 10 downs nobody talks about. Like anybody who writes about me only writes that you did that, you did that, you did that. Nobody writes what went wrong. So tell So, us. so there are a lot of times when things went wrong. See, we were a debt funded company. So before I sold the company, I had a 5 crore debt on me. Wow. Okay. So I was 21. I had a 5 crore rupee debt and I used to pay, and that was an unorganized debt. So I used to pay 10 lakh rupees interest every month. My gosh. So when you ask me, na, are you a risk taker? So when my batchmates were earning 5 lakh rupees a year, I was paying 1.2 crore rupees in interest every year. Okay. So there were days when I used to think what I am doing with my life. And when we started, I didn't have any hospitality or a real estate experience. I don't come from a family wherein this business exists. This is not a family business. So there was a learning curve where we learned how to take properties, how to kind of furnish them, how to service them, how to be customer focused, what is to be listened and what is to be ignored, what is to be done and what is not to be done. So there were a lot of things. Like I will give you an example. The first season was 150 beds. I promised everybody. So I'm very good at sales. Sales is my core strength. You keep talking to me, I will keep talking to you for the next 3 hours. I don't get a burnout on that. So, and sales is all about how good you are at talking, how good you are at convincing people. So I kind of convinced everybody that my hostels, which I am launching, are going to be the best. So I kind of took the deposits, took the money and kind of did the whole sales. Then there's this one day when the whole university shifts. That's 19th of July. So I remember 19th of July every year as a black day because all the people, some are coming from trains, some are coming from planes, some are coming from cars with luggages and with their parents, and they want to shift to a hostel. And when I sold, I was very confident that I will be able to provide services and everything. So what happened was half of my properties didn't have beds. Some didn't have almiras, some didn't have ACs. My kitchen, wherein the food was to be prepared, it was not activated for the next 7 days. I didn't have a laundry vendor. Wi-Fi was not there in most of the properties. So I was in a setup wherein it didn't even look habitable. Leave about being a hostel. So all those people who came, like they came to my office. So I remember walking down to my office and there were 100 people shouting, looking for me, Ki, what have you done? And I kind of ran away. Like, I cannot handle this. This is not like who I am, who can listen to so much of negativity. So I went to the park nearby my office. And that day I had a choice. Either I could have ran away, called my father and kind of settled everything and went back home, or I had a choice to go back to that room wherein all this messed up is going and kind of fight for it. Obviously, I didn't take the first decision, otherwise we wouldn't be talking. So I took the second choice, went back to the office, kind of did a please mujhe maaf kar do. I'm new to the business. Give me 1 week. I will settle down everything. If things don't get settled in 1 week, I will refund your money. I'm like your own kid. He or she might be 17. I am 19, 20. I am trying to do something good. I'm not running away. Give me 1 week. I will sort things out. So in the next 1 week, I sorted everything out and things went well.
So this thing got repeated next year as well, because I didn't have a lot of repercussions on it. So next year we expanded from 150 to 450 beds. So more properties, more kids, and a lot of. More headings. Yeah. So this time I couldn't handle it. Matlab, the first time I was able to fight it because there were limited people I could convince. Now 450 is a very big number, and what happens in a crowd is when one bookings get cancelled in front of 100 people, the other 100 follows it. So when this chaos happened the next year, I went into depression. So I wanted to run away, and I ran away that year. Which year was this? 2018. So depression is a very hereditary problem, you might know. So Yeah. depression runs in my blood. So my dad had a depression problem. My grandfather has a depression problem. My taujis and everybody has a depression problem. So that year I couldn't find, I went into depression. I called my dad up and he's like, koi dikkat nahi, I'm there. You try to sort things out. Don't take a medicine for depression, because as soon as you start taking medicine for depression, it is never going back. You will have to fight it internally. So we were 4 partners in the company. So I sat with the other 3 partners and I'm like, either I will die because I cannot handle this, or you will have to handle it. I will just kind of, because I sold it on my name. The other 3 were in the operations department. I was in the sales department. So I thought that I did wrong to people. So I kind of ran away for good 2 months, fought it internally. Meanwhile, my other founders, who I'm very indebted to, fought for the company. Although I was present virtually talking to people and all of that, but I had a good 2-3 month depression, which I had to fight, which a lot of people don't know. So, and it was a good experience. Like whenever I have a mental breakdown now, I know what is to be done and what is not to be done. Right. So depression only made me come out stronger. Yeah, true. It basically reminds you that you can overcome it again. You can overcome it again. And I guess आज सब लोग जो देख रहे हैं, हमको लगता है करके पैसा बनाना, हम लोगों को देखते हैं, उनको envy feel करते हैं कि वाओ उधर पहुंचे, पर like lot of people even look at, कभी हम लोग ने iPhone किसी का देख लिया, कुछ किसी की गाड़ी देख ली, उनको लगता है हमारे पास भी, पर वो बहुत मेहनत से भी आता है, बहुत इतना इजी नहीं होता। कितनी रातें ऐसे निकलती हैं जहाँ वो बंदा सोया नहीं, उस आईफोन का वो अचार नहीं डाल रहा, उसने कितना उसने बहुत मेहनत करी टू बाय दैट आईफोन। करेक्ट करेक्ट। एंड नहीं भी है तब भी ठीक है तब भी ठीक है, अगर से जिसको जो करना है, अगर से रिस्क नहीं भी लेना वो भी ठीक है, अगर से आपको ऐसे जैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को रिस्क नहीं लेना होता है, कुछ लोगों को ऐसे शांति वाली जिंदगी चाहिए, वो भी ठीक है। तो यू डिसाइड योर थिंग, राइट, एंड ही लाइक्स व्हाट ही इज डूइंग। सो व्हाट्स योर now, what's your goal, what's your dream, how's your business going at the moment? What's your high, what's your low, how's it going at the moment? Yeah, so basically I recently launched my product. We were in the phase of developing it for the last 8-9 months. We recently launched it. Things are doing pretty well, moving very fast. Okay. I don't have a particular objective like I want to make a unicorn or I want to earn this much money. I want to do, mera bahut sorted. I want to have a good life. I want to have a happy life. Because when money comes to you, you realize that there are things more important than money in your life. So I am not chasing money anymore. I made good money after selling my last company. I could have just made an FD and had a decent life, all just on the interest basis कि ठीक है जितने पैसे कमाने के लिए चाहिए लोगों को घर चलाने के लिए उतने मेरे इंटरेस्ट से बन जाते, मेरी सेविंग्स रह जाती। बट I didn't get high on that, I want to wake up with energy, go to work and आज मैंने ये उखाड़ा so that I can sleep peacefully. For me, sleeping happily is आज मैंने ये उखाड़ा, and not in terms of money, in terms of what I am doing, how things are moving, how things are impacting other people.
Like I care about impact too much, and not social impact. Matlab, see, there are definitions for everybody. Like for me, social impact comes later in life, when you have done good with your life, when you have time for social. I keep participating in different activities, but I keep it very private. For me, impact is if you are facing a problem and my company can solve it, and then there's a smile on your face after using my product. So I get a high seeing that smile in life. So we want to capture the maximum number of smiles through our products. So what are your products now besides this app, which is like getting all the landlords and all the services on one platform? So is that what you're doing, or is there something else also? That is the main core of the product. We want to build marketplaces around it. Like on the tenant side also, on the landlord side also. It's a very long plan. I want to redefine how rental accommodation takes place in India. So जैसे suppose AC नहीं चल रहा, ठीक है, AC का, और वो लैंड तो AC वाला भी वहीं पे होगा कि तुम अपने उसने अभी इतना सिस्टम है, उसने कंप्लेंट किया, लैंडलॉर्ड के पास कंप्लेंट पहुंच गई, लैंडलॉर्ड ने अपना एसी वाला भेज के कंप्लेंट सॉर्ट करा दी. लेटर ऑन 6 months डाउन द लाइन में भी वहां पर उसने कंप्लेंट करी, लैंडलॉर्ड ने मुझे बोल दिया कि तुम एसी वाला भेज दो, हमने एसी वाला भेज दिया, ठीक करा दिया, एंड लैंडलॉर्ड को बिल कर दिया. ओके ओके. दैट्स ऐसे भी हो सकता है कि और 4 एसी वाले अपना सब लोग अपना अपना कोड दे रहे हैं और सबसे रीजनेबल वाला कोड एसी वहां जा सकता है. That is what building a marketplace around exactly. So that's what I was thinking, that it would make sense. And और so ये तुम्हारा basically किसी ने कुछ एक क्वेश्चन आया है आपके लिए. Let's see what is the question. Hello sir, I'm currently doing MBA in finance at SSBF Pune. So Abhay, do you have a question? Nashikar Raj has said, yes, you can be part of the convo, but तुम तो exit कर चुके हो. मैं बाद में questions देती हूँ. If you want to come back, yes, you can. Abhay, if you have a question, you can switch on your camera and you can ask, unless you want to text the question. What would you suggest for a start? Suggest me for a startup. He's in. I don't suggest startup ideas to anybody. I tell you how to find a startup idea. You will have to do that on your own, because you are never serious about any idea which you get from somebody else. Yeah. Startup ideas are mostly finding a problem, solving it, and monetizing it. So there are problems you would feel passionate about. Like for example, Rachna feels passionate about solving for the kids. So she found a problem. She's now solving it through her own Discord channel or having conversations with different people. So this is her own startup. She wants to monetize it or doesn't want to monetize it. That's her own choice. But for me, building a business is all about finding a problem you deeply care about, solving it, and later monetizing it. Yeah, easily I could have monetized this. Can you see it? Because what he's saying, if I would have used my Discord, my YouTube, my Insta, if I would have linked it together, it would have been monetized and it could have become a startup, right? I would be teaching soft skills, English, ये वो करके. तो वो कह रहे हैं कि आप जिस चीज में आप passionate हो, वो कोई भी idea startup की तरह use कर सकते, right? Sunny, that's what you're trying to say. Definitely. और आजकल तो मेंटल हेल्थ को लेके कितने एप्स बन रहे हैं, कितने. जैसे मैं सॉफ्ट स्किल्स के साथ लेकर हिप्नोसिस को ऐड करके सीबीटी को लेके मैं इजीली अपना स्टार्टअप कर सकती हूँ. मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम बच्चों के पास ज्यादातर तुम लोग सब जो भी आते हैं 15 to 22 आते हो, तुम लोग के पास पैसे नहीं होते, इसलिए मैं नहीं कर रही. नहीं तो मैं भी कर सकती थी. आई कुड हैव मोनेटाइज्ड इट इजीली, बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज फॉर दैट वेरी रीजन. सो या. एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी एक्सपेंसिव. Yeah, exactly. That's the reason. Counseling is very expensive. I could have, but चलो कोई बात नहीं. तुम लोग जब तक maybe next year I will charge the ones who are 25 and above. Depends on what you want in life. Yeah. What's clear? Like I help a lot of people in starting up businesses. Like I advise a lot of people on various startups and all of that, how to raise money, how to find an idea and all of that. I never charge anybody for it because I do it out of passion.
and I do it on my own terms, like whenever I have time. So how do you said you help people on what? How to raise money, and what was the other thing? How to start a company. Like if anybody is facing a problem, कि ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, if I have time, I give it to them, and I don't start. Tell us a little bit how to raise money. Like if the children are watching, could you give us some tips? Yeah, I will tell you one thing very honestly. Raising money depends on two things. Either the founder should have a pedigree, okay, or the business should be good enough for somebody else to come in. So when I was running my last company, I tried a lot of वो क्या बोलते हैं lot of times raising money as equity, which I was not able to do because my business was not in good shape. Because it is a very locally set up business, not a multi-state or a multi-fancy business. And I didn't have a pedigree. I was just somebody who's out of college. If I would be doing that business, I would have gotten a 4, 5, 6 lakh rupees per annum ka placement. So even if we were 4 people, our opportunity cost was 25 lakh rupees a year. Now, when I started a company again, I raised money on just an idea. Like I didn't even have a team. We were 2 founders and we went out, we raised 3 crores. Just an idea from people like the founders of Bharat Pay and even Springboard. Because now my time was valuable. They knew that if I'm whenever you are raising money, you have to give a 3 years lock into the company. So if they know that if I'm giving 3 years to the company, I could have done way better things in life. I could have taken a good job. I would have gotten now a good package. So because my opportunity cost is high. So either the founder pedigree or the opportunity cost of the founder should be too high. That is why these MBA people get, I'm Ahmedabad, IIT Delhi वालों को startup funding मिलती है because they come from big companies leaving 50, 60, 70 lakhs का package. तो अगर 3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, स्टार्टअप किया, तो 2-2.5 करोड़ रुपए का तो अपना नुकसान भी कर गए. So nobody mind putting 2-3 crore rupees ka angel check in them. And otherwise your business should speak for its own self. Like you can see a business and would you invest in that? मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे 3 करोड़ रुपए रेस करने हैं और बिजनेस में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू भी नहीं है. एंड मैं उनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए होते और मेरी ये कंपनी होती, क्या तुम पैसे डालते? सच बोलना. तो जब तक आंसर यस ना आए, you should not even try for raising. He's asking, what are the skills you suggest one must have to do a startup? What are the tips to be a good leader? Skills and what tips to be a good leader? Skills and tips to be a good leader, you should be a good listener. I've seen people bossing around people, their juniors. But to be a good leader, you don't have to boss around people. You have to listen to what they want to say. And you, for being a good entrepreneur, the biggest skill set you need is you need to be a good leader. If you are not able to lead a good team, build a good team, you will not be able to crack entrepreneurship. And the other biggest skill set you need as an entrepreneur is you need to have a risk-taking capacity. If you don't have a risk-taking capacity, don't get into entrepreneurship. It is not for you. You will end up winding up your business too soon. वो मीम है ना, डायमंड मिल गए थे, बस उससे 2 मिनट पहले ही खुदाई बंद कर दी. So for being an entrepreneur, you need to have that level of risk taking कि मैं लास्ट तक खोदता रहूंगा जब तक दीवार ना आ जाए सामने. And people who don't have the risk taking capacity give up too early. Basically, you have to have the stomach for it because इतना stress लेने की capacity होनी चाहिए. Definitely. Right. Did you think that I asked you all the important questions? कि कुछ ऐसा question रह गए जो तुमको लगता है मैंने तुम्हें पूछा? नहीं, we covered the basic questions. If you are talking to me for the first time, these are the basic questions somebody asked me in a podcast. What would you suggest? Anything else? Any tips and anything else you would like to tell the children today? What would you suggest? What advice would you give them? See, whenever I go to a event wherein the target audience is 18 to 24, I say a very simple thing. Until and unless you turn 27, 28, you don't have a lot of responsibilities on your shoulder. When you turn 27, 28, it is your mother's and father's retirement age. So
you need to get settled in life so that you can contribute to their life also, because they will stop earning after that. So you're just one generation before you becomes kind of dependent on you. And as soon as you turn 27, 28, India is a country wherein you get married, and as soon as you get married, your parents need kids. So there is one other generation that is adding to your life, who will be totally dependent on you. They have to go to school, you need to find a good place, you need to find everything. So before 27, 28, you don't have any responsibility, but as soon as you turn 27, 28, you have two generations to take care of. And starting something of your own or exploring your passion after that is very difficult. When you are 18, most of you have your parents sending you money for your basic expenses till you turn 23, 24, 25. So you don't have to kind of earn for the basics of life or for anybody dependent on you. There are extreme cases, I know, but in most of the cases, what happens is what I'm telling you. So go explore life between this 18 to 27 in terms of everything, what you want from life, personally, professionally, hobby wise, business wise, job wise, because post that you will get into a circle wherein you will feel stuck, and living life getting stuck is very difficult. I've seen my friends earning good money but crying because they are not able to do things they love, and nobody told them to explore when they were your age. तो कहते ना पैसा तो आ ही जाएगा यार, पर कहते ना खुशी नहीं मिलती पैसे आने के बाद भी. ये कड़वा सच है दुनिया का, जो हम लोगों को पता ही नहीं है जब तक पैसा नहीं कमा रहे हम लोग. Thank you so much, Sunny, for making time. Thank you for your tips and advice. Appreciate it. I know आप weekday पे आए हो और आपके full day work के बाद यहाँ आए हो. Thank you so much for your time. Not a problem. It's always pleasure talking to young people. Thank you so much. Appreciate it. चलो, thank you. Bye. See ya. Thank you guys for being here. कैसे हो तुम लोग सब? I know मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना. Last I think I came here on my birthday. कैसे है सब लोग? सब ठीक है? किसी को कोई questions है? और one more podcast आ रहा है next Monday. I'm trying to get someone to. I will confirm it, and it is going to be a topic most of you all have been telling me to get someone. Porn addiction पे किसी को लाने की कोशिश किए जा रही है. So just fingers crossed that it works, and it is going to be someone from the US. So hopefully it should work. एक तो time difference की वजह से इतना difficult होता है to get a foreigner to come on a podcast. बाकी बताइए, अरे कुछ लिखो. थैंक यू साधना ही है ना, साधना यार. मैं यहाँ का ऑन करती हूँ. फोन पे नीचे देखने से ना मुझे इरिटेशन होती है आजकल, पता नहीं क्यों. हाँ, एक पहले पॉज करो. वेलकम साधना. हाय हर्ष, हाय अभिषेक, हाय शिवम. थैंक यू शुभम गुप्ता फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. हाय सीए, हाय बी म्यूजिक, हाय स्टडी सिंह. Sorry, Shubham Gupta, we were late today because he was running late. Then I had an issue with my, क्या बोलते हैं, with my Zoom. अभय, पीयूष, hi, how are you? तुम लोग कुछ बोलोगे कि बस Zoom पे ऐसे मुझे ताकते रहोगे? हेलो हाय कर सकते हो ऐसे बाय. You're allowed to do that. तुम लोग पता नहीं कैसे ऐसे. You know, you can sit on YouTube and you can sit on Zoom and just watch a person. How are you? I hope you're well. Network is really slow. किसका, तुम्हारा कि मेरा? तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because we could hear and see each other. You won't hear me. अच्छा, you won't hear. Okay, yours. ठीक है, you can text. Hi Gaurav, कैसे हो? Good to see you here. How are you people doing? I hope you are all fine. ये प्रॉब्लम चैट ये वाला बंद कर दिया. चैट आप मेरा स्लो नहीं है यार, मुझे तो यहाँ नेट नजर आ रहा है. क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? ऐसा काहे बोल रहे हो?
मुझे तो नजर आ रहा है। हाँ, कैसे हो सब लोग? कोई क्वेश्चन है कि मैं चलूं? कैसे हो गौरव? क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक? देखो, चैट में लोग हैं पर चैट में कोई चैट ही नहीं करता। कुछ दिन तो कंटिन्यूस टक 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 खत्म नहीं होता, ठीक है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं लिखते, कुछ भी नहीं, एक इंसान ने बस खाली चैट पढ़ना होता है। क्या लिखा है? अरे आप इतने बड़े बड़े ब्रेक मत लिया करो मैम, बहुत मिस किया। अच्छा इतना बड़ा ब्रेक कहाँ लिया? बड़ा ब्रेक था ना? हाँ एक्चुअली था ना, क्योंकि मैं 2 जून को आई थी। इसके बाद नहीं आई क्या? याद ही नहीं आ रहा यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्यों नहीं आई थी? हाँ वो टीचर बीमार हो गई थी ना। हाँ मैं तो आई थी लास्ट वीक। कोई पॉडकास्ट नहीं था क्या? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग इतना स्लो चल रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा। और तुमको पता है क्या हुआ था बर्थडे के बाद? मैं इतनी थक गई थी, इतनी थक गई थी कि 5th को पार्टी थी, ठीक है, 6 को टीचर बीमार थी, फिर भी मैं रेडी थी। 6 को कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ था, आर यू श्योर? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। और आई कांट टेल यू हाउ टायर्ड आई वाज, हाउ टायर्ड आई वाज। एंड 6 को आई डोंट नो व्हाई आई फील देयर वाज अ पॉडकास्ट। एनीवे सो आई नो कि प्रोग्रेसेस नहीं हुआ था, टीचर बीमार थी। एंड ऑन द बीम एक हुआ तो था यार, क्या बोल रहे हो? वो हर्षदीप के साथ सेशन नहीं हुआ था 6 को? क्या बोल रहे हो यार गौरव? तो 1 हफ्ते के बाद तो आई हूँ। लंबा सेशन का हुआ, 1 हफ्ता हुआ है। हाँ लेमन डाउन तो हुआ था ना। माय क्वेश्चन इज पीपल वांट अटेंशन। ओके, 1 मिनट यहाँ पढ़ने दो, फोन पे पढ़ती हूँ ना। आए आए तो थी ना लास्ट वीक, क्या बोल रहे हो यार? माय क्वेश्चन इज पीपल वांट अटेंशन है। डू पीपल वांट अटेंशन? या पीपल, ऑल पीपल वांट अटेंशन क्या? हाँ तो ऑन द बीम हुआ था, वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हो इतना टाइम हुआ? 1 हफ्ता ही तो हुआ क्या? 1 हफ्ते में क्या 2 बार आऊं? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार? क्या करूं पता है, मेरी सॉर्ट ऑफ पैकिंग स्टार्ट हुई। पता है क्या हुआ है? सो वी वर सपोज टू मूव टू दुबई लाइक on 25th of July, right? And I was supposed to go there, then come back in September, pack and go back, right? But now we have decided कि we will pack baggage by 30th of July, and I'm not going to come back to Jakarta. तो अचानक इतना काम आ गया है ना, like, and by the way I'm going to start भगवान बचाए जो मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है, उसके लिए तुम लोग प्रेयर्स बोलना। क्योंकि मैंने सोचा है मैं ड्राइविंग क्लासेस लूंगी। मैंने लास्ट ड्राइविंग सीखी थी जब मैं 18 साल की थी बॉम्बे में, ठीक है, तब मैं फिर भी ठीक थी। अब मैं ऐसे किस्म की इंसान हो गई हूँ कि मेरे सामने अगर से एक एंड भी जाती होगी तो मैं वो एंड को बोलूंगी प्लीज जाइए, मैं रुक जाऊंगी, टाइप्स वाली इंसान बन गई हूँ। तो तो मैंने सोचा है नेक्स्ट वीक संडे से मेरी फर्स्ट क्लास होगी, पर मैंने पैसे नहीं भरे। I was supposed to tell my husband to transfer the money. ठीक है। So सब लोग बोल रहे हैं दुबई में ड्राइविंग मजा आता है, although it's the other side of the road, पता नहीं क्या होगा। शायद I need to switch the seats with my driving instructor and learn on this side of the road rather than this side of the road. I think it's a left-hand drive or whatever. So वो भी करना है, पैकिंग भी करनी है। पता है मेरा सबसे chaotic ड्रॉर कौन सा है घर में? मेरा बेड साइड ड्रॉर। Okay, for people who don't know me, I am the most organized, disorganized person that you will know. Okay, I am very well put together as a person, but मेरा सबसे chaotic drawer मेरा bedside drawer होता है। मतलब पूरे दुनिया का वो सब सामान वहाँ होता है, ठीक है। From whatever I apply on my face to my भगवान का बुक, लाइक मैं शिरडी साई बाबा का सच्चरिता पढ़ती हूँ, मेरे भगवान का जो भी, लाइक आई एम, you guys know right, I'm part Hindu, part Christian, part Sikh,
like everything is like in that drawer. पता नहीं क्या नहीं होगा, ठीक है, उस ड्रॉर में. तो एक्चुअली आई सारा सामान मैंने वीकेंड पे निकाला, इतना जंक निकला, मतलब पता नहीं क्या, लाइक इतने सालों पुराना पता नहीं क्या क्या निकला नहीं उस ड्रॉर से, इतना तो मैंने निकाला इतना. सो आई हैड लाइक 3 things, right? What to throw away, what to keep, what to give away. So there were like 3 sections of that drawer. Okay, so I did that. So first I just started that, so ताकि दुबई जाके ऐसा ना करना पड़े. So the whole house is in a fucking mess. Okay, and हमारे फेयरवेल पार्टीज चल रहे, तुम लोग बोल रहे हैं इतना. मैंने 5 दिन से बाहर खाना खाया, इतना खाया कि मेरे चीक्स, पेट सब, and I can't tell you how much I have eaten. Okay, everybody is just feeding us like we have not eaten food. उफ, खा के बेजार हो गए हम लोग. मतलब जब तुम किसी कंट्री में 25 साल रहते हो ना, तुम इतने दोस्त बनाते हो, और हर दोस्त को तुमको प्यार दिखाने का एक ही तरीका होता है, तुमको खिलाने का. ठीक है, खिलाते रहते हैं मतलब. Oh my God. And I have this friend, okay, I have couple of friends who own restaurants here, okay. Oh my God, they had like 8 to 10 course meal. उफ, खाना तो अमेजिंग, बट कितना खा सकता है एक इंसान, कितना खा सकता है. लाइक मैं कोशिश कर रही थी कि ब्रेकफास्ट लंच बहुत बहुत कम खाऊं, ताकि डिनर तो, और मोस्टली सारे डिनर्स ही होते हैं, बट इतना, उफ, मैं थक गई खाना खा के. उफ, कल भी खाना कल खाना है बाहर, ठीक है. ओके, मैं क्या, रुको मैं चैट करती हूँ. आप हमारे लिए वो भी बहुत है. अच्छा ठीक है. अरे हमारी मैम, now I have to choose my college, so I have 2 options. First one is I have to go with all of my friends, or I take admission in that college and no one is going. Also, I have to make new friends. What should I do? Please give some new tips. New college. Okay. Okay. So, okay, you don't make a judgment, make a decision like that. That's the wrong way to make a decision. You go, pehle to you make a decision what is good for your career. Your friends are not going to stick with you all your life. That's not the way to make a decision. You choose a college because is it going to help your career? Other teach is, हमारे बच्चे ने जब स्कूल कॉलेज चूज किया है, वो तो कनाडा गई पढ़ने को, ये नहीं देखने गई कि कौन सा उसके फ्रेंड्स कौन से कॉलेज जा रहे थे. नहीं, उसने, शी स्टार्टेड हर लाइफ फ्रेश, not knowing a single person over there. Okay, so this is not the reason you choose a college. You choose because वो सर्टिफिकेट जहां से आपको मिल रहा है, क्या वो आपको जॉब मिलने में, क्या उनका प्लेसमेंट अच्छा है, क्या उनके कोर्सेज सही है, क्या उनका टीचर्स अच्छे हैं, वो रीजन होता है कॉलेज चूज करने का. क्या हो गया है आपको? इट्स टेलिंग मी टू स्टैंड अप, कहाँ स्टैंड अप करूं? तो सही रीजन से चूज करो. ये कोई रीजन है आपका चूज करने का? 1 मिनट इधर क्या है? थैंक यू मैम, आई बी ओके. अबे प्लीज गो फॉर डिनर. ओके, डोंट वरी. थैंक यू फॉर दुबई फॉर आप, एंड डोंट वरी, मैं अपने आप से चैट करने में माहिर हूँ, ठीक है. एंड गौरव, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज. प्लीज चूज द राइट कॉलेज, ठीक है, एंड नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस. अच्छा, तो मैं चलूं? और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैंने अपने आप से वार्तालाप कर ली है और आपको भी गाइडेंस दे दी है, सही चीज. एंड अभिषेक, मैंने आपका भी क्वेश्चन आंसर कर दिया. 1 मिनट, मुझे मैसेज आया है व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू. क्या है? हेलो, क्या है? या टुमारो. देखो मेरे अभी फैमिली गई है. मैम नेक्स्ट टाइम कब आओगे? कब आऊंगी? मेरी फैमिली कल मेरे हस्बैंड का 60th बर्थडे पार्टी है, तो कल हम लोगों को डिनर पे बुला रहे हैं. ऑल्दो उसकी पार्टी हो चुकी है, पर कल मेन बर्थडे है, तो बहुत स्मॉल डिनर है, बट फिर भी उसके लिए कल के खाने के लिए आज ट्रायल करने गए. मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि कल के खाने के लिए आज खाना खाने की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है.
तो खाना जो बच गया अभी बोल रहे खाना खाने, कैन यू इमेजिन 2 बार इंसान, उफ, तो अभी बोल रहे खाना खाने और रात के 10 बज रहे, कौन खाना खाएगा? मतलब आई डोंट नो, मैं किससे बात करें? मैंने गौरव सिर्फ तुम और मैं और 4 लोग मुझे देख रहे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं क्यों तुम लोग से बात कर रही हूँ। आई नो आई शुड बी गोइंग बट क्या ओके, मैं आऊंगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंडे आऊंगी। क्या आज आज क्या 13 तारीख है? नहीं, मैं एक्चुअली सोच रही थी मिड वीक आऊं बट टाइम नहीं है, क्या करूँ यार, पैकिंग भी बहुत है और इतना काम है, आई कांट टेल यू कि कितना काम है। जस्ट टू प्लान माई लाइफ एंड नेक्स्ट एंड while I'm leaving, I'm trying to at least try one podcast per week। और अभी प्रोग्रेसेस खत्म हो गया है और मैं तो सोच रही थी यू नो कि क्या मैम इस महीने कितनी बार पार्टी, कितनी पार्टी की, अब तुमको पता है कि कितनी पार्टी है? मेरे फेयरवेल्स लाइक अभी आपको मैं बताऊं, 17, 18, 19, 22nd, 24th, 25th, 26, सब दिन पार्टी से उफ, दिमाग पक गया है खाना खा खा के, क्या करे? और ऐसा भी नहीं हो सकता यू नो, क्या मेरा मन करता है चलो ठीक है सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, एक एक मील खाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, पता है भूख लगती है। तो इंसान ऐसा, क्योंकि इट्स नॉट गुड ऑल्सो ना कि पूरा दिन तुम नहीं खाओगे और एक मील खाओगे, भूख भूख तो लगती है, इंसान इंसान हो फाइनली, हाउ टू नॉट ईट, ऐसा भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो खाते हैं। तो वो भी अच्छा नहीं होता बिकॉज देन फाइनली इट्स लाइक व्हेन यू डोंट ईट ऑल डे and then you finally eat one big meal, that entire fat then sticks to your body, so that is very unhealthy. So yeah, hi anonymous how are you, good to see you here. So yeah, how are you doing? I hope you're well. पता नहीं anonymous तुम्हारा रियल नाम क्या है, पता नहीं तुम लोग ऐसे नाम क्यों रखते हैं, एटलीस्ट गौरव का रियल नाम गौरव है आई थिंक, या सो तुम्हारा रियल नेम क्या है? देखो ये प्रॉब्लम है, मैंने खाना खाया था बिफोर कमिंग ऑन स्ट्रीम, तो बाय द टाइम आई लीव द स्ट्रीम मुझे भूख लगने लग जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी सो जाने का। और तुम लोग जरा जल्दी जल्दी आंसर करो ना, हाउ आर यू लिखा है तो हेलो लिखने के आगे फिर आगे क्या? और 6 पीपल आर वाचिंग मी, मैम आज का पॉडकास्ट बहुत छोटा था। हाँ, क्योंकि वो तुम लोग क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, उनको मैंने क्वेश्चंस पूछ लिया था, अब मैं क्या करूं? उसके आगे क्या क्वेश्चन पूछूं? तुम लोग भी नहीं पूछते हो ना रेलेवेंट क्वेश्चंस, कुछ जैसे फिटनेस लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और अगर से मेंटल हेल्थ वाले होते हैं उनके ज्यादा होते हैं, सर्टन लोगों के साथ सर्टन क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बट इट्स ओके, एवरी पॉडकास्ट कांट बी लाइक स्ट्रेच। जैसे आस्था के साथ बहुत लॉन्ग होते हैं क्योंकि वो सोशल क्वेश्चंस होते हैं, सो दोज आर दैट कैन बी, that's like there's so many topics you can talk when it's those kind of topics, so it's okay generally। acha, good to know। अरे शरण पाटिल, आई एम गुड पाटिल, आमची माती आमची माणसं, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? अरे शरण पाटिल काहे रिट्रैक्ट किया क्वेश्चन? मैंने पढ़ लिया था बाय द वे, ऐसा कुछ होता है क्या? हेलो लिखने के बाद कोई रिट्रैक्ट करता है मैसेज? देखो फिर से लिख दिया। अच्छा हाँ, मैम किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो, नहीं आप लोग भी लिख सकते हो ना, लाइक ऐड करो ना, लाइक यू कैन, लाइक हियर देयर वर 2-3 people who asked and I asked the question, so you can also ask, it helps me also। and आप कैसे हो शरण? I hope you're well। actually today what happened, you know, so last progresses last week होने वाला था, टीचर ने लास्ट मिनट बोला कि वो बीमार है, तो लास्ट मिनट कैंसिल हो गया, राइट? अब मेरे दिमाग में मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि प्रोग्रेसेस के दिन मैं वो टाइम पे अपॉइंटमेंट्स नहीं रखती, अब मेरे दिमाग में था कि ये हफ्ते प्रोग्रेसेस नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट हफ्ता वाज द लास्ट सेशन, तो मैंने ये हफ्ते प्रोग्रेसेस के टाइम पे अपॉइंटमेंट्स लिए थे। मेरे दिमाग से निकल ही गया कि टीचर ने कैंसिल किया था और इस हफ्ते रखना है। तो आज जब मैं मुझे रियलाइज हो कि उप्स,
मैंने प्रोग्रेसर्स के टाइम पे 2-4 पूरे अपॉइंटमेंट्स रखे थे, इतना अपॉइंटमेंट्स थे आज मेरे मुझे इतना, I was so tired today because I had appointments before, during. मेरे को इतने सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े अपने काउंसलिंग कॉल्स के, मैं इतनी थक गई थी। और फिर मैंने पॉडकास्ट भी रखे थे और मैं पॉडकास्ट भी कैंसिल नहीं कर पाई। मुझे लास्ट मिनट रियलाइज हुआ कि उप्स, प्रोग्रेसर्स भी है, पॉडकास्ट भी है, तो सारा एडजस्टमेंट करना पड़ा। और फिर मेरे पति का कल बर्थडे भी है, पर एक अर्जेंट कॉल भी है, तो फिर भी मैंने कल एक एक काउंसलिंग कॉल फिर भी ली है क्योंकि वो बहुत अर्जेंट है। और आज भी ली थी क्योंकि जब किसी के पेरेंट्स की डेथ होती है या ऐसा कोई केस आ जाए तो मैं हमेशा उनको प्रायोरिटी देती हूँ। सो एक एक अजीब केस आई है, मैं तुमको एक बार वो हैंडल हो जाएगी ना, मैं तुम लोग को उसके बारे में बात जरूर करूंगी क्योंकि आई एम वेरी इरिटेटेड। शरण पटेल, ओके, आई एम हैप्पी। क्या गलत लिख दिया? अच्छा, ओके, माय नेम इज निखिल, इज जस्ट टू कीप प्राइवेसी। क्या प्राइवेसी निखिल? क्या ऐसा? दिस इज नॉट फेयर, हमारा नाम ऐसे पब्लिक में और आप लोगों का क्यों नहीं? दिस इज नॉट फेयर। ओके, गलत तो कुछ नहीं लिखा था पर मुझे तो समझा नहीं क्या लिखा। उप्स, 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 LOLZ, पता नहीं क्या उप्स। तुम हंस किस खुशी में रहे हो पता नहीं। ओके, ओके मैम, मेरे हाथ लिखते लिखते थक चुके, कितनी बार लिखा पड़े, आप हर बार कैसे ब्यूटीफुल लगते हो। पता नहीं, अरे तुमने तो देखा नहीं, मैं तो पार्टीज में तो और भी अच्छी लग रही थी। अरे इफ आई शेयर माय, मैं मेरी जो कब थी पार्टी, 5th को थी राइट, मेरे को याद भी नहीं 4 जून की जो पार्टी में जो मैंने पहना है ना, एंड मैंने प्रोफेशनल मेकअप कराया और प्रोफेशनल हेयर कराया। अरे आई वाज लुकिंग सो, आई मीन खुद ही सो फनी, मैं खुद ही बोल रही हूँ बट चलो ठीक है। बट ऑनेस्टली आई मीन लाइक इफ आई मस्ट से माय से सॉरी। सच में सब लोग बोल रहे थे, सिर्फ मैं नहीं, बट मैं सच में उस दिन लाइक आई वाज लाइक रियली लुकिंग लाइक, या अरे कौन मुझे इतना मैसेज कर रहा है? ओके, हाँ, बाय द वे मैंने अपना ये फोन तोड़ दिया। मेरा दूसरा फोन, मैंने एक्चुअली 1 मिनट पहले मैं क्लियर कर दूं, मैसेज है तो लोगों के नजर आते ये वाला नोटिफिकेशन ऑन है। 1 सेकंड, अपन उसको बंद करेगा। हाँ, तो इसमें अलार्म ऑन था, ठीक है, तो वो क्या, वो वाइब्रेटर होता है ना, तो ऐसे। और देखो इस ये वाला पीछे भी ऑन है, इसका स्क्रीन गार्ड भी ऑन है, तो ये तो मैं नजर भी आ रही हूँ, ये तो सटक सटक के फोन ऐसे ऐसे स्लाइड होते हुए, ओके, स्लाइड होते हुए वो गिर गया। और जब गिर गया तो उसका स्क्रीन, ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ये iPhone 10 है, ये मेरा लास्ट वाला फोन है, थैंकफुली नया वाला फोन नहीं टूटा, वो दूसरा वाला 12 है, तो इसके ऊपर लाइन है। अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि फालतू में पैसा क्या खर्च करने का, ये सेकंड बैकअप फोन है, तो ये बैकअप फोन को हम अभी फिक्स नहीं करेंगे, फालतू में पैसे खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोन ये वाला है। और हम नया वाला फोन नेक्स्ट ईयर लेंगे। तब तक हाँ, तब तक वो वाला फोन हम लोग, इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, पैसा कमाने रहे ना, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करने का। पिघल गया भाई, कौन पिघल गया? मैम व्हाट्स रिटन ऑन माय शर्ट, मेरे को भी नहीं मालूम, कुछ तो लिखा, शी इज शी इज she is living the life she loves, yeah, she is living the life she loves, something like that, yeah, something, yeah, she is living the life she loves, yeah। क्या मैम, मेरे वेकेशन चल रहे हैं, सारा दिन बैठे बैठे भूख ज्यादा लगती है, एक्सरसाइज कर है। मैम अरे पिघल गया क्या, कुछ नहीं यार, बच्चे लोग हैं तुम लोग मेरे। हाँ, अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा तो हम चलते हैं, और मेरे मेरे लिए दुआ रखना, ठीक है, और दुआ में याद रखना टाइप्स वाला, ओके।
I hope you people are well. दुबई में फिक्स कर लेना मैम. नहीं, नया फोन लेने का है ना, iPhone 14 आएगा तो नेक्स्ट ईयर लेंगे, ठीक है. अभी नहीं लेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं किया है मेहनत वाला जो iPhone 14 लेंगे. मैं ना आई फील कि थोड़ा इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए. वैसे भी पैसे तो मैं कमाती नहीं हूँ, नेक्स्ट ईयर में भी कमाऊंगी. जो भी 25 साल वाले क्लाइंट्स है ना, गेट रेडी टू स्टार्ट पेइंग. तुम लोग सारे कोई नहीं पे करते, जल्दी जल्दी कमाना स्टार्ट करो और पे करना स्टार्ट करो मेरे को, ठीक है. चैनल तो कुछ पे नहीं करता, यूट्यूब चैनल मेरा. तुसी ना जाओ. और क्या बैठ के क्या यार, एक तो वायलिन भी बजाना नहीं आता तो वायलिन भी बजाना फाइट भी है. हम लोग 4 लोगों के लिए चैनल चलता है मेरा. इट इज सो फनी ना. चलो 11 लोग देख रहे, चलो आइए 11 लोग. वो बोल रहा 11 रुपया में पूजा में 11 रुपया देते ना, तो ऐसे चल रहा है यहाँ. और 11 लोग तुम लोग कैसे हो? चलो कौन है, चलो नया कोई है कि चैनल पे, क्यों वही सेम लोग है. मैम दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है. आई थिंक नॉट वेरी सस्ता, सिमिलर, थोड़ा सा सस्ता है. इट्स नॉट दैट डिफरेंट, बट ज्यादा जल्दी मिलता है. ये कौन है? रिस्पेक्टेड और जल्दी. यार कभी कभी मेरे को लगता है मैं अपना बाल खींच लूंगी यार, इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं ना, मैं पागल हो जाऊंगी. पता है, मेरे को एक केस आया है आज और मैं बहुत गुस्से में हूँ. मुझे लड़के पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि उसको पता चलेगा मैं क्या बोलने वाली हूँ. क्योंकि मैं अगर से अभी बोलूंगी तो मैं तुम लोग को बताऊंगी उस केस के बारे में, क्योंकि मेरे पेट में तो वैसे कुछ बचता नहीं, राइट. क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है ना, लाइक कुछ लोग ऐसे कमीने होते हैं ना. एनीवे, न्यू. अच्छा, हेलो हिमांशु. यार कभी कभी आई विश आई कुड डू like speak another language or something. Let me try Gujarati. I don't know why I feel Himanshu is Gujarati. Kem cho? Yeah, hey, not bad man. Hey Himanshu, तुसी kem cho? Like okay ma'am, क्यों parents? Sorry. Hey Himanshu, how was my Gujarati? Are you Gujarati or Punjabi? Whatever. I just mix two languages. I mean, I must give myself credit that I can do 2 languages. I just mix Punjabi and Gujarati at the same time. I don't think anybody can do that. Like, you have to give me that. Please give me that. Okay. Ma'am, क्यों parents हमें पढ़ाना चाहते हैं? Okay. Yeah. See, I got that. I like dhokla and wait. What else? Okay, I don't like your meetha dal. Okay, I don't know why you people put sugar in your dal, but dhokla is, yeah, thepla is also good. Yeah. And by the way, I'm from Bombay, so if you're from Bombay, we have something in common. Okay. जितने भी लोग, मैडम जो जाने नहीं देगा चैट कर पाएगा. ओके ओके, वाई पीपल, ए रुक जा, तेरी तो कलयुग, तेरे को मैं आंसर अच्छा वाला देती है, ठीक है. मैम क्यों, अभी मैं सीरियस होना चाहती हूँ, मेरे को सीरियस होने दो, रुको. मैम क्यों पेरेंट्स हमें पढ़ाना चाहते हैं? अरे ओ महान आत्मा, मैं समझाती हूँ. पेरेंट्स इसलिए तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो तो चले जाएंगे. ओके, उनको फर्क नहीं पड़ता. तुम पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे अच्छे के लिए काम है. तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर क्या करोगे लाइफ में? ओके, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू वांट टू वर्क and be a laborer, drive a car, because there are jobs which don't require education. Perhaps being a salesman at a sari shop, a driver, maybe a peon or a security guard. It's fine. That is also fine. Every job is respectable. Yes, you might not get paid as much, but when you study, when you maybe get a degree, एक जमाने में, हमारे जमाने में जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे,
इट यूज्ड टू बी लाइक अ बिग थिंग, राइट? अब तुम ग्रेजुएशन करो, आपको कुछ खास जॉब नहीं मिलने वाली। एक जमाना था एमबीए करना बहुत बड़ी बात होती, आज एमबीए करो कुछ नहीं होता। आजकल लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, फिर शायद उनको जॉब मिलते हैं। आजकल एक जमाना था डॉक्टर होने से बहुत बड़ी बात होती है, अभी डॉक्टर सिर्फ जीपी होने से कुछ नहीं होता, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। सो जमाना चेंज हो गया है। पढ़ाई लिखाई करने से तुम जितना अपना स्पेशलाइजेशन करते हो उससे तुमको बेटर पैसा मिलता है, बेटर लाइफ मिलता है। अगर से आपको बेसिक लाइफ चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके, बट इफ यू वांट टू मेक अ decent life for yourself, you want to at least like have the basic and maybe basic necessities and few luxuries, you need to earn money, because unfortunately you do need to study and get a decent job to get those necessities and those luxuries, because unfortunately ये बैठने से सिर्फ, वैसे आपको एक मिनट, मुझे ठंडी लग रही है तो मैं शॉल ओढ़ने वाली हूँ, तो आपको इजीली वो फ्री में नहीं मिलता, राइट? आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? दान में। इसलिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने कहते हैं। आपको नहीं करना, आपको रेगुलर लाइफ करनी है, वो भी ठीक है, बट वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आप लोगों को समझ में नहीं आता कि फाइनली योर पेरेंट्स मीन वेल फॉर यू। You will outlive your parents sometimes by 20, 30, 40, sometimes even 50 years. I was 22 when my father passed away. It's already been, what, 25 years? It's going to be perhaps 50 years. I might outlive it. हमारे ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो it was okay. But अब मेरे ज़माने में I I want my daughter to study. And if, I don't know if you're a girl or a boy, but I'm doing for my daughter, yeah, even for my son, but for my daughter specifically, because I don't know what marriage she will be in. What if her husband, they need a second income? What if she is in a bad marriage? What if she needs to support herself, not to support me only? Okay, we are not expecting that from our children. Hopefully we don't have to depend on them, but I want her to take care of herself. I never want her to किसी और के सामने सामने उसको फैलाना पड़े, वो अपने आप को देख पाए। तो दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजंस दैट वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने आप का ध्यान रखे। हमने हमारे बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनना, दोनों बच्चों को, आई वांट बोथ माय चिल्ड्रन टू स्टडी, ताकि कभी उनको, we'll try to leave थोड़ा बहुत पैसा हमारे बच्चों के लिए, बट what if हम लोग को, हमारे जितना हमने पैसा कमाया है, सपोज हम लोग, मैं और मेरे पति बीमार पड़ गए एंड जो भी हमने कमाया वो यूज अप हो गया, और हम लोग खास कुछ हमारे बच्चों के लिए नहीं छोड़ पाए। जैसे मेरे डैड हमारे लिए कुछ खास छोड़ नहीं पाए, बिकॉज माई फादर वॉज नॉट फाइनेंशियली दैट वेल ऑफ, एंड नाइदर वॉज माई फादर इन लॉ वेरी वेल ऑफ, ही ऑल्सो डिडंट लीव मच। सो देन वॉट, देन what will happen to my children? So it's good that वो अपना खुद के लिए अपने आप को संभाले। जैसे हम लोग, we are self made, right? My husband is self made, my brother is self made, and that's very important। अगर से दोनों पढ़े लिखे नहीं होते, my husband unfortunately उनको चांस नहीं मिला इतना पढ़ने को, but he's very hard working। मेरे भाई को भी इतना चांस नहीं मिला पढ़ने को, but he is also extremely hard working। बहुत मेहनत की। और तुम लोग को तो थैंकफुल होना चाहिए अगर से तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा है, और अगर से तुम्हें पढ़ा लिखा रहे। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैम, एक बच्चा अभी जिसको मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू आते हैं। एनीवे, चेंज द टॉपिक। क्या लिखा है, क्या लिखा है? मैम कोई
नहीं, मूवी देखने का चांस ही नहीं मिला. क्या लिखा है? सॉरी, श्वेताब क्या क्या श्वेताब कहाँ से आ गए बाबा? श्वेताब के साथ कब? नहीं, श्वेताब के साथ आई डोंट थिंक सो. मैम दुबई में हाँ, तो जिसने ये बोला ना कि प्लीज स्टडी, ओके, if you're getting a chance and if your parents are paying for it, the children who are suffering and they're not getting a chance to study, don't waste this opportunity if your parents are paying for your education. Okay, don't miss this opportunity. Happy death day क्या होता है यार? ये क्या होता है? ये नया, ये कुछ नया सुना है मैंने. ओके, ओके, हमें ये एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद बेटा, पर क्या करें? आपके पास चॉइस क्या है? या तो आप पढ़ो लिखो और ये सिस्टम को बदलो ना. आप भी बड़े होके मे बी यू कैन चेंज द सिस्टम. व्हाई डोंट यू ग्रो अप and change the system? Why don't you maybe one day become the educational minister of India? Why don't you do something instead of complaining and victimizing yourself all the time, playing victim? Why don't you change something about India? Yes, the Indian system has to change a little bit instead of only making it about grades and 90%. जैसे हमारे बच्चों के स्कूल में असेसमेंट्स नहीं होती इतने, जैसे आईबी स्कूल में भी है मेरा बेटा, इतना एग्जाम्स पे इतना प्रेशर नहीं डालते, बाद में लास्ट ईयर्स में डालते, बट उन लोग ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड, दे मेकिंग द चिल्ड्रन मोर थिंकर्स एंड ऑल दैट स्टफ. आई लाइक दैट. मींस प्रेशर है पर इतना प्रेशर नहीं है. कुछ स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं होता. लाइक जो अमेरिकन सिस्टम में जो मेरी बेटी जाती थी, वो भी बहुत कम था. लाइक आई एम लाइक यार थोड़ा तो प्रेशर डालो, बिकॉज out in the world there is so much competition, right? So that is also a problem कि बिल्कुल नहीं डालना pressure. So there has to be like a balance. Okay, नहीं, it's okay, I'm okay. I just feel कि you don't know the cases I get ना Gaurav, like every day it's like it's so much extreme. इस extreme में कुछ चल रहा है. कभी अभी recently एक केस आया है जहाँ पे एक, I'm going to post the snapshot on Insta and I'm going to give a trigger warning, like I'm going to give you a trigger warning right now. Father is molesting his own 2 daughters. ऐसा भी होता है. ऐसा रोज रोज इतना झेलना पड़ता है. एंड ऐसा इंडिया में हो रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है. इतना पेन है. तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड सेइंग कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ करो तुम लोग सब बच्चे, हम सबको मिलके अपने सोसाइटी को बदलना है. अपने को सारा टाइम कंप्लेन नहीं करना है. मैं जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. तुम सबको भी चेंज करना है, तुमको सोसाइटी में चेंज लाना है. हम ये चैनल के थ्रू सिर्फ अपने लाइफ में चेंज नहीं लाना है, अपने को अपने कंट्री में थोड़ा बहुत करके, चाहे इतना ही सही, अपने इर्द गिर्द अगर से तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है उसमें तुमको चेंज लाना है. तुमको सिर्फ कंप्लेन नहीं करना है अपनी जिंदगी के बारे में. तुम्हारे भी लाइफ में चेंज लाओ. हो सके तो तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको भी मदद करने की कोशिश करो. पढ़ाई का चांस मिल रहा है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टडी. ओके बच्चा. क्या मुबीला कदी येणार? मुबीला कौन है? मुबीला की मुंबईला? यू मीन बॉम्बे कब आने वाली हो? आई एम गेसिंग यू मीन दैट विशाल. Maybe in December, because it's my brother's wedding in Jan. क्या ma'am, why does society forces only women to learn cooking and cleaning? um, why not men too? I think it's skill. Definitely it's हमारे इधर नहीं होता. I don't know इंडिया में क्यों इतना होता है, but हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता. हमारे like my younger brothers, the one in Atlanta, he and his he's getting, the one I'm saying is getting married in Jan. He cooks. His to be wife, his fiance, she also cooks. They both work. They both cook and clean. My elder brother, who's older than me, he cooks. His wife cooks. हमारे इधर तो staff है, but if I'm working, my husband will also help me. My brother who works in Bombay, his wife and he works. They both work. Even he cooks. His wife also cooks.
सो हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में भी जब मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों बेकिंग क्लासेस में जाते हैं, when my बेटी was dating this guy, they both were in the baking classes. My daughter, her boyfriend and my son, all three went for the baking classes. तो ये इंडिया में होता है, हमारे इधर कुकिंग इज कंसिडर्ड अ लाइफ स्किल. ऑल द बॉयज गर्ल्स, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके सारे बेटे खाना पकाते हैं. अब्रॉड में, यूएस में, यहाँ पे सारे लड़के खाना पकाते हैं. मुझे नहीं पता इंडिया में ये माएं ऐसा क्यों करते हैं. इट्स अ पेट्रियार्कल शिट दैट दे डू इन इंडिया, दैट द बॉयज आर सपोज टू आरती उतारते हैं कि खाना नहीं, सब लोगों ने खाना पकाना चाहिए. इट्स अ लाइफ स्किल. आयनिंग बोलो, खाना पकाना बोलो, सब लोगों ने करना चाहिए. हम सबको आना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं आना चाहिए, सब लोगों ने करना चाहिए. एंड यू आर राइट, it should be taught to all, and it should not be only girls should be doing it. You're correct. And it should not be just a girl thing. Yeah. And no, also learning, yeah, of course everybody should. Ma'am, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा चेंज किसने लाया था? आई मीन आपके मेंटोर कौन था? शरण, मेरे लाइफ में मेंटोर एक थे एक्चुअली. I would not say I ever had a mentor, because as most people know ki I was a very I didn't have a great childhood, but I was a very firm believer in Shirdi Sai Baba. So I used to only talk to Shirdi Sai. As growing up, I used to feel very lonely, so I used to talk to him. And yeah, but I can say, in 10th, my father had stopped our schooling for various reasons. And I think I had told this story once before, but I'll say it again. So क्या हुआ था कि हमारा 10th में प्रीलिम्स हमने दिए नहीं थे, तो ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स में फेल ही होंगे. जब एग्जाम्स ही नहीं दिए थे प्रीलिम्स से, तो बिल्कुल स्कूल में गए थे. तो एग्जाम्स के टाइम मेरे ब्रदर ने डैड को बोला था, अब इन लोग फेल हो जाएंगे, घर से स्कूल नहीं गए, आई मीन एग्जाम्स नहीं दिए, 10th के बोर्ड्स आ रहे थे, और हम लोग स्कूल नहीं गए थे. और तो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम मेरे भाई को कोई ट्यूशन, तभी हमारे जमाने में, दिस इज लाइक इन 1980s, गर्ल्स के एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इट्स लाइक ओके, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक वो टाइप्स के थे. तो डैड के भी अपने इश्यूज चल रहे थे, तब मॉम भी नहीं थी. इट वाज नो बिग शिट, राइट. एंड डैड के खुद के स्ट्रेस थे, उनका कोई फॉल्ट नहीं था इसमें. हम भी कुछ खास पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो टाइम पे गर्ल्स की स्टडीज का इतना कोई ये नहीं था. हम लोग भी कुछ खास पढ़ाई नहीं कर रहे थे. आई वॉज लाइक नॉट रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड ऑल दैट. बट ठीक है, बिकॉज माई ब्रदर सेड कि नहीं करना चाहिए. मे बी माई ब्रदर न्यू मोर बिकॉज ही वॉज स्टडिंग. सो डैड से ठीक है, करा दो, 10th करना ही है. तो उसी 2 महीने पहले, बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम्स, एक सर चक्रवर्ती करके कोई आए थे, जो मेरे भाई को पढ़ा रहे थे, सॉरी. तो वो घर आए उस 2 महीने में, जस्ट बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम. अभी पूरा साल बैरली पढ़ाई किया था, और ये 1980s की बात है, ठीक है. पूरे साल बैरली पढ़ाई किया, क्योंकि वो जमाने में हम लोग, लोनावला वाज लाइक अ विलेज, ना लाइब्रेरी होती थी, ना कुछ खास कुछ किया नहीं था. 9th में पास हुए थे, पर मेरे को याद नहीं क्या ग्रेड वेड थी, ठीक है. 2 महीना हमने पढ़ाई किया. और 10th की पढ़ाई, आई थिंक तुम सबको मालूम है कितनी डिफिकल्ट होती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, भला ना धमका, पता नहीं, मैथ्स वैथ्स सब होता था. तो सब कुछ हो गया, ठीक है. और आई रिमेम्बर कि रिजल्ट जब आए, तो सुनने में आया था कि हम लोग के जब रिजल्ट आए थे, कि रिजल्ट जब बाहर आए थे, तो पता चला कि किसी को फर्स्ट क्लास, मेरे रिजल्ट्स में आया था कि सुनने में आया था किसी को फर्स्ट क्लास आया है. मैंने शिरडी साईं बाबा को बोला था, प्लीज मेरे को फर्स्ट क्लास आने दो. और तो मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को आएगा, तो मैंने प्रे किया था. हमारा लॉफ्ट हुआ. लॉफ्ट का मतलब घर, हमारा एक बेडरूम किचन होता था, हम सब एक ही घर पे, एक ही रूम था हम लोग का. तो मैं एक लैडर हुआ करता था, लैडर के ऊपर एक रूम होता था जहाँ पे सारा सामान होता था. एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था. तो मंदिर में जैसे, साई प्लीज मेरे को मिलने दो, तो मैंने ऐसा किया था. और फिर जब रिजल्ट आया, तो मुझे फर्स्ट क्लास मिला था. और वो टाइम पे 1980s में
फर्स्ट क्लास मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं इतनी खुश हुई थी, मेरे को